So good morning, everyone. Like in the last class, we practiced about the picture option, clip art, shapes, smart art option. And then we did practice for the this header, footer, page number, text box, word art, drop cap. ये सारा option में practice किया था, ठीक है? So today we are going to work on the table option also, and we'll do practice for the page layout option also. ठीक है? So at the first we are going to work on the table. Suppose in a Microsoft Word you have to make table. आपको कुछ table बनाना है. You have to write name of the semester name, age और class something आपको कुछ बनाना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? Table चाहिए. So for it you have to click here on the table option. और यहाँ से आप select कर सकते हो that how many columns you need or how many rows you need. Okay, it will show you columns like 1 column, 2 column, 3 column, 4, 5, 6 column हो गया. Now you can increase the rows also from here, like 1 row, 2 row, 3, 4, 5, 6. Okay, these are columns, these are column, and these are rows. Okay, vertical lines are rows. Sorry, मैं create करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है? Suppose I want to create here one table and it should be 4 rows and 3 column. ठीक है, 4 columns and 3 rows हमको बनाना है टेबल के अंदर. तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, you have to select the column from your 1 2 3 4 and sorry 3 columns 1 2 3 and rows number 4 2 3 4. ये बन गया. These are column 1 column 2 column and 3 column, and these are rows 1 row, this is a 2 row, and this is the 3rd row, and this is the 4th row. आप यहाँ से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, हाइट और विड्थ ऑफ द टेबल. जस्ट यू नीड टू क्लिक हियर, माउस को यहाँ पे लेके आओ, क्लिक करो और ड्रैग करके ऐसे स्मॉल कर सकते हो, और यू कैन मेक इट बिगर आल्सो लाइक दैट. Like I'm writing here serial number, name, class. ठीक है, अब हमको कुछ डिटेल्स इनपुट करना है. सपोज आई एम राइटिंग हियर द 1 नंबर, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आमिर, क्लास 10th. Okay, now writing here the 2, Farhanaz 12th. Then again click here, write the 3rd number, serial number, writing another name, Nargis 8th. अगर आपको एक और रो क्रिएट करना है, ओके, सपोज यू वांट टू क्रिएट वन मोर रो हियर आफ्टर द 3rd नंबर. सो in the 3rd row anywhere you can click, आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो. then you have to click right click of the mouse, माउस का राइट बटन प्रेस करना, then click the insert option, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा that where you want to create a row above or column. अगर आप row above करोगे, so then row will create between the row number 2 and 3. अगर आप row below करोगे तो वो आफ्टर द row number 3 columns row create होगा, ठीक है? सपोज at the first I'm going to create the row between the 2 and 3. ये 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में क्रिएट करना है. I want to create a row between the Farhanaz and Nargis name. Okay, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया 3rd नंबर लाइन पे, so I will click the option right click and then insert row above like that. और अगर आपने ये 2nd लाइन पे क्लिक किया होगा और फिर क्या करोगे, राइट क्लिक इंसर्ट रो below, तो ये नीचे बनेगा, ठीक है? बट हमको इसके नीचे चाहिए आफ्टर द 3rd लाइन, so I can right click here, insert, I have to press the option insert row below, तो ये नीचे आएगा. मैं यहाँ पे 4 नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे नाम लिखा मुस्तफा, यहाँ पे क्लास 10th कर दिया. एंड if you want to create row after that, so no need to click right click, आपको right click करने का जरूरत नहीं है. there's another way also to create a row after the last cell ना. तो क्या करोगे, in the last column last cell is this one, ये टेबल का सबसे लास्ट वाला बॉक्स है, सेल जिसको बोलते हैं. जस्ट क्लिक हियर एंड देन प्रेस टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड. ओके, इन योर कीबोर्ड दिस की टैब, आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब की,
ओके उसको प्रेस करना, जस्ट क्लिक हियर एंड देन प्रेस द टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड। व्हेन यू क्लिक हियर ऑटोमेटिकली रो क्रिएट हो जाएगा नीचे, ऑटोमेटिकली रो विल क्रिएट हियर। ठीक है, यहाँ पे रो क्रिएट हो गया। यू कैन राइट हियर द 5 नंबर, यू कैन राइट अनदर नेम हियर आल्सो। Again press the button, again row will create here. You can use tab key to go to the next cell. Suppose इसको और छोटा करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करके छोटा कर सकते हो। You can make the smaller this. Suppose you wanna write here the gender also. आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम बनाना है जेंडर का। So and you want to create the column between the name और class और after the class. Suppose after class करना है तो राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, यू हैव टू चूज ऑप्शन कॉलम राइट अगर आपको इधर बनाना है। बट अगर आपको कॉलम क्रिएट करना है बिटवीन द नेम एंड क्लास, ओके, इफ यू वांट टू क्रिएट ए कॉलम बिटवीन द नेम एंड क्लास, सो यू हैव टू प्रेस राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम द लेफ्ट साइड, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम जेंडर मेल फीमेल like this. Like that we can create a table. Suppose I want to write one heading for the table, एक टेबल के लिए हेडिंग लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट्स डिटेल ये लिख दिया। एंड सपोज ये मुझे क्या करना है, टेबल के अंदर ही लिखना है ऊपर, और इसको भी टेबल के अंदर ही इनपुट करना है। सो वी कैन डू वन थिंग, जस्ट राइट क्लिक हियर ऑन द टेबल ऑन द फर्स्ट रो, सबसे ऊपर का रो पे क्लिक करो, देन प्रेस राइट क्लिक ऑफ द माउस, इंसर्ट की एंड देन यूज द ऑप्शन रो अबव एंड देन यहाँ पे आप टाइप कर दो स्टूडेंट्स डिटेल, स्टूडेंट्स डिटेल और स्टूडेंट्स डिटेल, एंड इसको सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे। ओके, सेलेक्ट दिस रो, नाउ देयर इज 4 कॉलम्स, ओके 1 2 3 4 कॉलम, ये सारा कन्वर्ट होके एक सेल बन जाएगा। ओके, यू कैन सी वन थिंग, व्हेन यू सेलेक्ट इन दिस टेबल, सो देयर इज अनदर ऑप्शन लेआउट इज कमिंग। अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो नहीं शो करेगा, दिस इज नॉट लेआउट ऑप्शन, बट व्हेन यू क्लिक इनसाइड द टेबल, सो देयर इज अ लेआउट ऑप्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन क्लिक द लेआउट ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन मर्ज सेल, सिंपली क्लिक करो मर्ज सेल पे, तो क्या हो जाएगा, ये सेल आपस में मर्ज हो जाएगा, इट्स मीन इट बिकम वन सेल, बिगर वन। ओके, देन यू कैन यूज द ऑप्शन सेंटर बटन, ये सेंटर में आ जाएगा, देन यू कैन सेलेक्ट इट, देन यू कैन क्लिक द बोल्ड अप्लाई ऑप्शन, then increase the font size, if you choose color, so you can apply the color also, then you can click on this table to select the table को select करने के बाद you can click the option design, okay, and then in the design option there's a lots of option, you can choose any of the design from here, यहाँ पे बहुत सारा कलर ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। so this table will look like that, okay, आप font color चेंज कर सकते हो, if you don't like this red color, so change it to another color। ठीक है, like that you can change, so this is option table। ठीक है, ये टेबल ऑप्शन हो गया। एक नया पेज लेते हैं हम, यहां से कंट्रोल एन किया, न्यू पेज, नाउ पेज लेआउट ऑप्शन, राइट। पेज लेआउट ऑप्शन बेसिकली यूज फॉर द सेटिंग्स ऑफ द पेज, जो भी आप पेज पर टाइपिंग करोगे, जो भी आप यूज करोगे फॉर सेटिंग ऑफ दैट पेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंटेंट ले लेते हैं। ओके, सो इक्वल RAND and then I'm going to insert 6 paragraph here, then use Ctrl A to select all, then you can apply justify option from here also, or either you can click the shortcut key Ctrl J also। ये हो गया। now see, press Ctrl button from the keyboard and
माउस का स्क्रॉलिंग बटन, द मिडिल बटन स्क्रॉल करो, तो पेज को आप इससे स्मॉलर एंड बिगर जूम और जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। ओके, विद प्रेस कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्क्रॉल डाउन द माउस। ओके, माउस का बीच वाला बटन, मिडिल बटन। ओके, right now this page on a which position, vertical. Okay, this page on a vertical. So there's a two types of orientation in MS Word page, portrait and landscape. So this vertical page is called the portrait, and if I click on the landscape, so it's come horizontal. तो क्या हो जाएगा ये horizontal. So this is called the landscape. अगर पेज आपका horizontal होगा, so it is called landscape. अगर आपका पेज vertical होगा, so it is called the portrait. Then you can select all this content. आप इसको select को select कर सकते हो. Then you can click the option column option. Then you can choose 2 column 3 column. आप जितना कॉलम चूज करोगे, ये जो टेक्स्ट होगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम यू कैन सी इन न्यूज़पेपर में होता है, ऐसे लिखा होता है. इन योर स्टोरी बुक आल्सो इट्स रिटन समटाइम, राइट? Then after you can select this first letter, and then you can go to insert option, use drop cap option, and apply this. Look like a newspaper articles. ठीक है, ये भी इजी ऑप्शन है. और एक ऑप्शन है साइज. साइज मींस द पेज ऑन विच यू आर गोइंग टू टाइपिंग, ऑन विच यू आर गोइंग टू टेक प्रिंट आउट. आप ये जो आपने टाइपिंग किया वो पेपर का साइज क्या होगा. ओके, बेसिकली वी हैव टू यूज द A4 साइज पेपर. जो हम नॉर्मल पेपर यूज करते हैं दैट इज द A4. ओके, मोस्टली हैव टू यूज द A4. जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेटर हेड्स होता है, और कोई भी आप देखते हो जो फॉर्म्स वगैरह होता है, सब A4 साइज में ही होता है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स. एंड इफ अगर A4 से डबल होगा पेपर, बड़ा जो पेपर होता है दैट इज कॉल्ड द A3. और A4 साइज का जो हाफ पेपर होता है दैट इज कॉल्ड द A5. ठीक है, सो बेसिकली 3 पेपर यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू यूज ओनली A4 साइज पेपर, दिस वन. आप यहाँ चेंज कर सकते हो. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है मार्जिन. मार्जिन मीन्स यू कैन सी यहाँ पे आप जो भी पेज पर टाइपिंग हुआ है, दिस टाइपिंग इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम दिस कॉर्नर. यहाँ पे कुछ गैप है ऑन द फ्रॉम टॉप साइड ऑल्सो, ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और बॉटम में भी गैप होता है. ठीक है, सो ये दैट गैप इज कॉल्ड द मार्जिन. तो हाउ टू अरेंज द मार्जिन, यू हैव टू क्लिक मार्जिन ऑप्शन, कस्टम मार्जिन पे जाओ. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो इफ यू विश. अदरवाइज यू कैन क्लिक द ऑप्शन कस्टम मार्जिन ऑप्शन, और आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो. आप कितना चेंज करना चाहते हो, लाइक 127, और कितना करना चाहते हो, लाइक मुझे करना है आपसे 1 इंचेस. 1 इंचेस कर दिया. बॉटम में भी कर देते हैं 1 इंचेस. 1 इंचेस यहाँ से कम हो गया. ठीक है, दिस इज स्पेस. यू कैन इंक्रीज ऑल्सो. at the place of 1 I can give here from the top 2 inches also. और यहाँ पे इंक्रीज कर सकते, जितना भी इंक्रीज करोगे, लाइक आई एम इंक्रीजिंग है ना टॉप मार्जिन, तो ये नीचे आ जाएगा. ठीक है, बेसिकली व्हेन वी हैव टू गिव द मार्जिन ऑन द टॉप, जब आप कोई प्रिंट आउट लेते हो ऑन द लेटर हेड, like if you visit some doctor and lab for you go for any test like blood test or anything, तो जो आपको जो रिपोर्ट्स होता है वो क्या करते हैं, दे गिव प्रिंट ऑफ दैट रिपोर्ट ऑन देयर लेटर हेड. तो लेटर हेड में ऑलरेडी नेम ऑफ द दैट लेबोरेटरी लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है. सो सपोज ऑन द टॉप ऑफ द पेज ऑलरेडी नेम ऑफ द लेबोरेटरी एवरीथिंग इज रिटन हियर, सो दे विल नॉट गोइंग टू टेक प्रिंट आउट फ्रॉम द हेयर ना. तो ये जो भी इसका रिपोर्ट्स होगा वो ऊपर से नहीं लिखेंगे. सो फॉर दैट केस दे गिव सम मार्जिन. तो यहाँ से वो मार्जिन सेट करते हैं. दे गिव मार्जिन फ्रॉम हेयर, सपोज ऐसे इंक्रीज कर देते हैं. ओके, लाइक आई एम गिविंग हियर द 5 सेंटीमीटर गैप. तो यहाँ पे वो लेटर हेड में ऊपर आ जाएगा एंड देन गिव टेक प्रिंट आउट. सो जो भी आप लिखा होगा रिपोर्ट्स, वो नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द लेबोरेटरी के ऊपर नहीं आएगा, वो पेज के नीचे से प्रिंट आउट होगा. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज कॉल्ड द margin. So I think this margin option, orientation option, and this size option and the column option all is clear for you. So next option is the watermark, page color and border. So see, अगर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ और भी कंटेंट ऐड कर लेता हूँ. ठीक है, some more paragraph. I add some more paragraphs here. So now there's 2 pages. Okay, suppose I want here the name of the company, the logo of the company here in the middle of this report.
ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे वाटरमार्क, देन यूज अ कस्टम वाटरमार्क. You have two types of watermark option. One is a picture watermark, another is a text watermark. Suppose you want to add here some logo of the company. Okay, आप कोई report लिख रहे हो, कोई article लिख रहे हो, and you want here the name of logo of the company. So you just need to click the option picture watermark, click the select picture option, और उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में से लोगो सर्च करना पड़ेगा जो आपके कंप्यूटर में सेव होगा. ठीक है, तो हम सर्च करते हैं कोई लोगो यहाँ से. सपोज आई एम गोइंग टू चूज दिस ऑप्शन, ये वाला लोगो चूज कर लेते हैं. ठीक है, इंसर्ट किया, अप्लाई किया. जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ दिखा दे रहा है वॉश आउट. अगर वॉश आउट ऑप्शन रिमूव करोगे तो इट बिकम डार्क. बट हमेशा क्या होता है, वाटरमार्क शुड बी ऑलवेज वॉश आउट ऑप्शन, सो नॉट द dark color. And you can give a size also, like if you want in bigger size or smaller size, you can change from here like that. Suppose you don't want to apply here the logo of the company, you want to add here the name of the company text. So you just need to click the option text watermark, then you can write here the name of the company also like this. बॉस को दे लिखा, अप्लाई किया, इसमें ऐड हो गया. You can change the color of the text, any of the color you can apply, it's totally up to you. ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट है. इफ यू रिमूव दिस ऑप्शन इट विल कम लिटिल बिट डार्क, but always try the semi transparent option so it look good. You can use option horizontal also for this and then close. So this option is called the watermark. उसके बाद एक ऑप्शन होता है पेज कलर. ओके, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द पेज, और ये प्रिंट आउट में नहीं आता है. पेज कलर विल नॉट कम इन द प्रिंट आउट, इट्स ओनली फॉर द शो. ओके, ये ओनली सिर्फ प्रीव्यू में आपको शो करेगा पेज के ऊपर. यू कैन चूज एनी कलर. You can click the fill effect option, यहाँ से कुछ और डिजाइन भी टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो. इफ यू वांट लाइक दैट यू कैन अप्लाई. ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन होता है पेज बॉर्डर. पेज बॉर्डर, यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर पेज बॉर्डर ऑप्शन. यू कैन चूज एनी ऑफ द डिजाइन फ्रॉम हियर. यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है. यू कैन चूज कलर ऑल्सो फॉर दिस पेज बॉर्डर, देन क्लिक ओके ऑप्शन. इट विल कम लाइक दैट. पेज बॉर्डर अगेन, अगर आपको कुछ और स्टाइलिश चाहिए सो यू कैन अप्लाई. You can increase the thickness also of the border. ठीक है, अलग अलग बॉर्डर्स है. बट इफ यू डोंट वांट दिस सिंपल लाइंस, you need some symbols around the border. So just click the option art और यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो. You can apply the apples. You can increase the thickness or decrease the thickness of this apple also, like I'm going to decrease now. Page border, you can change any of the other design also you can apply. It's totally up to you. Okay, so I hope this option is also clear to all of you. Okay, तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया. One is the table option, then we learn about the in a page layout option margin, orientation, size and column, and then watermark, then page color and then page border. तो ये आज आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. And to get update about all the videos of the class, please follow the YouTube channel, okay, and subscribe. So you will get all the notification about all the new videos. जो भी classes होगा उसका video upload हो जाएगा, आपको मिल जाएगा. So for that you just need to subscribe the channel. Okay, thank you.